Assalamu alaikum everyone, this is Abahat and I'm here live in my evening session. Not every time I say evening, it's not evening, it's actually, nearly night time. So it's 7:30. So it is like near to night. So, well, I'm here and let me, just go on Facebook and see who's live here with me and who has done their avatar and they are now energetic and ready to watch this session. So let me just go and check on Facebook. Okay, so it's still 7:29, not 7:30. So I'm just going to wait and see if I can see people logging in. I know it's Monday, and most of you must have forgotten that there's a session today. So that's for this very reason I left, post on Facebook just to remind you that you have to come into the session and don't miss the session. Okay. So I'm just waiting and I'm just seeing as soon as I can see someone watching, I'll just start. Okay, so in the meantime, any one of you who is, okay, yes, now I can see someone who's live here. So do let me know where you are logging from, and I hope my voice is not very low, because I myself feel I'm, speaking at quite a low volume. Muzammal Jara, thank you so much for joining this session and watching it. So I hope you might have guessed by the caption, and if not from the caption, you must have guessed by the post, because I wrote the whole quote over there, and I want you to go over that quote, and even from the caption. What do you think this topic is about? You know what, in my topics, I plan to talk about diversity and, about various different concepts, about abstract concepts, about, descriptive subjects, or about, basic things out of which, you can talk so much, you can analyze so much, and you can, get people involved in those subjects and topics. So that's why I just come up with these kind of topics or captions, and most of the time I'm just writing the quotes and just posting them out here so that we can have a good interaction regarding those topics. So today's topic, today's actually it's a quote, and it's about seek out experiences that expand your perspective and deepen your understanding of the world. So that is what I plan to talk about today, and how can our experiences deepen our perspectives and broaden our understanding or deepen our understanding about the world. So this is what I plan to talk about, and in the meantime I would want you people to interact as well and come up with your suggestions and your comments. And I can see people at the top of my screen, but my policy, I'm not going to invite you during the session, but after the session I would try my best to invite you, and if you're still on the top of my screen, then only then I can invite you. Otherwise, if you're not, I cannot invite you. So okay, Naeem Suleria, walaikum assalam, I hope you're fine. Ravi Tohani, thank you so much for joining this session and watching. Azra Khalid, thank you so much for joining and watching this session. Okay, Jan Muhammad, thank you so much for joining and watching this session, but I think after some time you might have to go for your avatar, because it's your avatar time is nearly, it's very near. Okay, walaikum assalam, Jan Muhammad. Okay, so सबसे पहले जो है, okay, today I'm going to take the sport of both English and Urdu, and I'll try to maintain a balance between both the languages. ओके, जब सीकिंग नॉलेज की बात होती है या सीकिंग पर्सपेक्टिव की बात होती है, एंड हाउ आर पर्सपेक्टिव्स व्हेन वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, हाउ डज इट चेंज आवर पर्सपेक्टिव. सो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये होती है कि वी नीड टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी जो है किस तरीके से आप एम्ब्रेस कर सकते हैं कि व्हेन यू आर
experiences, like you're experimenting with different experiences, or like you go out into different parts of the world, और इवन यू मीट डिफरेंट पीपल. जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो आप देखें कि आपका पर्सपेक्टिव कितना ब्रॉडन होता है. यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि लाइक आप सोचते हैं और उन चीज़ों को आप एक टैबू बना लेते हैं कि भाई लाइक अगर आप कहीं किसी फॉरेन वर्ल्ड में गए हैं या किसी फॉरेन कंट्री में गए विजिट करने, तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बचपन से आपके जहन में चलती आती हैं या इर्द गिर्द आपको लोग बताते हैं कि भाई बाहर की दुनिया ऐसी है, बाहर के लोग ऐसे हैं, उनका ये कल्चर है, उनका ये बिलीव है. तो एक चीज़ जो है ना जहन में बैठ जाती है और उससे जो है क्या होता है, उससे एक डर बैठ जाता है. सो वो आई एम सॉरी. सो वो जो डर और वो फियर होते हैं ना, जब आप जाते हैं और आप खुद जाकर एक्सप्लोर करते हैं उस दुनिया को और उस वर्ल्ड को और उस कंट्री को, तो फिर आपको समझ आता है कि नो, ये तो टोटली इट्स टोटली डिफरेंट. अब्दुल रज़ाक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन. सो तब आपको समझ आते हैं कि नो, द वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट. सो ऑल दोज ईयर्स, ऑल दोज, यानी बचपन से लेकर जवानी तक, और शायद अगर आप बुढ़ापे में कहीं बाहर जाते हैं एंड यू कम टू रियलाइज़ कि भाई मेरे तो जितने जो सो कॉल्ड जो जिन चीज़ों पे ट्रेनिंग की गई थी, दोज वर ऑल रॉन्ग. या चलो सारी रॉन्ग नहीं थी, बट मोस्ट ऑफ देम वर रॉन्ग. सो जब आप जो है, यानी अगेन इसमें वो एलिमेंट आ जाता है ग्रोथ माइंडसेट का. इफ़ यू आर ready to open your mind and accept diversity and explore yourself, and for that reason you have to go out, or you have to meet different people of different diversity, different cultures, different areas, तो फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो दुनिया के बारे में चेंज होता है. इसमें जो है एक और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि जब आप ये चीज़ें कर रहे होती हैं, एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, तो ये आपकी कॉग्नाइटिव ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. कॉग्नाइटिव ग्रोथ इज़ mostly related with our intellectual ability of analyzing, of reasoning, of factual thinking about analyzing different things, different people. So जब आप जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं या डिफरेंट लोगों के साथ डाइवर्सिफाइड जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो ओपन होती है, एंड यू गेट टू थिंक अबाउट एंड analyze more and more people. So this is also helping you in, सो यू कैन डेवलप योर सेल्फ. अब आप ये देखें बहुत से लोग जो कि बाहर जाते हैं, इमिग्रेट कर जाते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान. अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, या यूएई चले जाते हैं, या फिर कनाडा चले जाते हैं, या फिर अमेरिका चले जाते हैं, या अगर कोई और कहीं पर रहता है. तो बात यह है कि क्यों लोग जाते हैं. लोग जाते हैं फॉर गुड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, या जहाँ पर उनको फाइनेंशियल तौर पे वो इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पर उनको जो है इकोनॉमिक्स सस्टेनेबिलिटी हो सकते, जहाँ पर जो है वो इकोनॉमिकली अपने आप को जो है अप्रेस कर सकें, स्टेबल हो सकें, कोई यानी इस तरीके का जो है वो सरमाया कमा सकें जिसको वो लेकर फिर अपने मुल्क वापस आएँ और फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें. सो इसीलिए लोग जो है डिफरेंट मुल्क्स में ममालिक में चले जाते हैं, चाहे इमिग्रेट करके जाएं या चाहे परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पे वहाँ पर चले जाएं. सो इसी तरीके से जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं वो भी अपनी जगहों से माइग्रेट करके ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि प्रॉस्पेक्टिव ज़्यादा अच्छे होंगे. सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को जो है ग्रो कर रही होती हैं, और आपको जो है एक एनालिटिकल माइंडसेट दे रही होती हैं कि भाई आपने चीज़ों को किस तरह एक्सप्लोर करना है और उसमें आपका पर्सपेक्टिव किस तरह चेंज होता है, एंड देन इवेंचुअली यू ग्रो आउट ऑफ ऑल दिस. सो दिस इज़ अनदर थिंग कि जब कि आपका पर्सपेक्टिव किस तरह चेंज हो रहा होता है. अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जब आप अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो है डालते हैं ना, चाहे आप जो है इमिग्रेट कर जाएं या चाहे आप जो है डिफरेंट लोगों के साथ जो है उठ रहे बैठ रहे हों, तो उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना आप में एम्पैथी और कंपैशन का जो एलिमेंट है वो पैदा करता है. अब वो किस तरीके से पैदा करता है? सबसे पहले तो ये है कि आप देखें कि आप में से वो लोग जो कि लाइक दूर दराज या किसी जो है गांव में या बहुत ही कोई छोटी डिस्ट्रिक्ट में रहते हों, और फिर ये है कि यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू गो टू दी कंट्रीज़, या जो आपके जो है कोई भी जगह है, कोई मेन सिटी है, उसकी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एंड यू
enroll yourself into that best university. और फिर उसमें आप ये देखते हैं कि then you come across people coming from diversified backgrounds, उसमें हर background के लोग होते हैं. And then इकबाल जरकाश, thank you so much for joining in. Shiraz, okay, thank you so much for your compliment. You always give so nice and broad compliments. Okay, thank you so much. Okay, so acha, Iqbal, Y is for what? Y is for yes, or प्लीज़ एक्सप्लेन. एब्रीवेशन मुझे नहीं समझ आई. सो आप जिस वक्त जो है लाइक जो एम्पैथी और कंपैशन है वो इसी तरीके से आप डेवलप करते हैं. लाइक आपने जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ पर देन यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड, एवरी रीजन, प्रोविंस. कायद आज़म यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर जो है लाइक पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स. कोई जो है बलोचिस्तान से आ रहा है, कोई क्वेटा से आ रहा है, कोई गिलगित से आ रहा है. And when you communicate with them and you come across them and they have such diversified cultures and traditions, और जिस तरह यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जो है उनके फेस्टिवल्स होते हैं या वेलकम होता है या कोई भी जो है उनका फन फेयर वगैरह होता है या ट्रेडिशनल कोई होता है, ट्रेडिशनल वीक होता है. सो उसमें यू कम टू नो अबाउट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स कि हर एक का क्या कल्चर है एंड यू इन्जॉय दैट कल्चर एंड यू अप्रिशिएट इट कि भाई हमारे मुल्क में जो है देयर इज सो मच डाइवर्सिटी. सो ये तो देखिए मैं बात कर रही हूँ अपने मुल्क के लिहाज से कि ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट अगेन. ये तो देखें डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में, पर यह है कि यही सेम डाइवर्सिटी जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं, लाइक अगर आप यूएस में जाते हैं तो यूएस में तो जो है देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर आई गेस 54 स्टेट्स, अब शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई होंगी. तो हर अगर स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में आप जा रहे हैं, इफ़ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक जिस तरह डिफरेंट फुल ब्राइट के एलुमनाइज होते हैं, दे गेट अ चांस, या जिस तरह का कोई हमफ्री स्कॉलरशिप पे चला जाता है तो ये दे गेट एन opportunity of going to different departments and meeting different areas या departments या उनके जो लोग हैं, and then you come across so many different people. So this is how your perspective changes and you deepen your not only your perspective but you also deepen your knowledge about the world. और फिर जिस वक्त आपको लोगों के साथ move around करना आता है तो then आपके लिए communicate करना बहुत easy होता है. And you know what, it's not difficult to communicate as long as you have this desire or this curiosity of learning and acquiring knowledge. And then again, it is, I would say, it's not even necessary that you should leave your comfort zone. But ये है कि yes, there's a time you have to leave your comfort zone and you have to go out and meet people and collaborate with different people. क्योंकि जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप लर्न नहीं करेंगे, आपका जो नॉलेज है वो ब्रॉडन नहीं होगा, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज नहीं होगा. बट देन अगेन देयर इज़ अ टाइम when you can do the same thing from the comfort of your home. You have the internet, you can become an encyclopedia yourself if you have this capacity of curiosity of knowledge and learning and self-pacing learning. So अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो you yourself can become an encyclopedia. But ये है कि going out and viewing people and communicating with them, that's an asset and that everyone must do. चाहे जो है आपको, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कहेंगे भाई ये नॉलेज मैं तभी गेन करूँगा या गेन करूँगी व्हेन आई लीव दिस कंट्री. नो, यू कैन गेन दिस नॉलेज सिटिंग इन योर कंट्री. यू जस्ट हैव टू मूव from one city to another city. You just have to look for prospects. Like if I'm in Islamabad and if I don't find good prospects over here, so मैं जो हूँ ऑनलाइन सर्च करती हूँ कि ऑनलाइन मुझे जो है कहाँ पर अच्छे prospect मिल सकते हैं. And if I find those prospects, I do apply over there to different prospects या जो भी जो है opportunities होती हैं. जिस तरह अभी ज़्यादातर जो है रिमोट वर्किंग सिनेरियो है, ऑनलाइन का ज़्यादा चांस है बनिस्बत जो है फिज़िकल जो है वर्क के. क्योंकि फिजिकल वर्क में देन यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग, यू हैव टू कंसिडर द फ्यूल, यू हैव टू कंसिडर योर टाइम. देन वही बात है, क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं, एज आ जाती है. पर रिमोट वर्किंग में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर अ स्किलफुल लेबर you can apply for as many jobs as you want. And remote working, it always pays you good provided आपके क्या skill set है and where you're applying. So the foremost thing is you need to have a good skill set जो कि आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, and
विच इज़ नीडेड बाय पीपल, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो है यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किन लोगों को सर्च कर रहे हैं एंड हु आर योर कस्टमर्स. इफ़ यू नो योर कस्टमर्स देन आपके लिए किसी भी जॉब पे अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता. बट इफ़ यू डोंट नो योर कस्टमर, जो जिस तरह जो है बिजनेस में जो है लाइक व्हेन यू आर स्ट्रेटेजिस्ट you have to look for different customer personas, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं. सो यू हैव टू सी दिस थिंग एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या स्किल सेट है. अच्छा, देन इसमें जो है एम्पैथी और कंपैशन में जहाँ तक बात है वो हमने बात कर ली कि यू गेट टू मीट विद ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड यू गेट अ गुड सेंस कि भाई कौन किस कल्चर से आ रहा है एंड यू अप्रिशिएट इट. एंड प्लस आप में एक कंपैशन डेवलप होता है, एक एम्पैथी डेवलप होती है, क्योंकि यू पीपल नो कि भाई हर एक अपने घरों को छोड़ के आ रहा है और मोस्टली जो है लोग अच्छे घरों के होते हैं और you need to give them a friendly and homely environment when you people are in universities या कहीं भी किसी भी एरिया से, इवन प्रोफेशनल बैकग्राउंड में भी. अच्छा, देन इसमें एक जो चीज़ होती है पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग अनफेमिलियर टेरिटरीज, तो उसमें जो है क्या होता है चाहे आप जो है ट्रैवलिंग के ज़फ़र शहजाद, थैंक यू सो मच. मोहम्मद बिलाल, वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद बिलाल, यस, मैं प्रैक्टिकली टीचर ही बन गई हूँ. आई यूज टू टीच इन अ यूनिवर्सिटी व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, बट देन आफ्टर दैट आई वेंट इनटू प्राइवेट जॉब्स. और प्राइवेट जॉब्स में जो मेरा एक्सपीरियंस है, एज आई हैव ऑलवेज आई यूजली टेल यू कि मेरा जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक्सपीरियंस है. बट नाउ प्रिटी मच चूँकि मैं लाइव जो है सेशंस दे रही होती हूँ, सो दीज आर ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आई हैव learned and experienced over time. So I'm practically sharing my insights and personal insights be or professional insights be, but pretty much yes, I am a teacher. So वो जो मैंने start में join किया था as a teacher, या I was a teacher in the start, so I can't let go of that, क्योंकि अब practically it's coming in front of me. I'm more prone to be a teacher. Okay, so personal development आपकी जो है बहुत ज़्यादा होती है. And yes, Muhammad Bilal, I do take classes online regarding different courses, whoever wants to learn regarding communication skill or whatever. So I can, give classes on diversified topics, whatever the need is. Okay, so personal development में जो है Jan Muhammad, okay, yes, please go and have your aftar. Thank you so much for joining in. ओके, पर्सनल डेवलपमेंट में देन आपका वही होता है कि भाई आपका जो स्किल सेट है वो ब्रॉडन हो रहा होता है. व्हेन यू आर इन अनफेमिलियर टेरिटरीज, तो यू आर प्रोन टू लर्न एवरीथिंग एंड यू आर लर्निंग. एंड स्किल सेट की एक जो मज़े की चीज़ है, इट्स नेवर लाइक यू से कि भाई ये वाला मैंने स्किल सेट ले लिया ना, तो अब इसके बाद कोई स्किल नहीं मैंने लर्न करनी. यू कीप ऑन लर्निंग every day. You're learning something new. Like I remember when I started with my own blog website, so I was blogging on it. Practically I didn't know how to blog, just having a English background. Like I had a degree in English literature and then a master's degree in women's studies. So I had this gap for writing, or I had this curious thing about addressing things, addressing issues which people do not normally talk about. So what I did was practically what I wanted to write, so people, newspapers, they won't allow me to write about it. So I just made my own website and I just started writing whatever I wanted to write over there. So that's how I started with blogging, and then everything which was included in blogging कि भाई ब्लॉग किस तरह लिखते हैं, कंटेंट किस तरह होना चाहिए, मार्केट रिलेटेड कंटेंट क्या होता है, ऑडियंस से रिलेटेड कंटेंट किस तरह होता है, देन व्हाट इज़ एसईओ, देन हाउ डू यू डू कीवर्ड सर्च, एंड देन कंटेंट मार्केटिंग किस तरह होती है. देन there were so many phases, and I had to learn each and every phase. And that's the reason when I started with these live sessions, and even I just I started with my own YouTube channel. That was a few months ago. So I started with
posting or making videos about content writing. So अगर आप लोग मेरे जो है YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो go and subscribe to my channel and you can watch the whole series about content writing या blogging किस तरह होती है and this and that. So I have just uploaded the whole course over there. So आप वहाँ पर भी जाकर जो है ना you can learn a lot about blogging and content marketing and content writing. So like when I went into this thing about blogging and websites, I had to learn each and everything on my own. क्योंकि जब आप चीज़ स्टार्ट करते हो उस टाइम पे जो है you don't find people and mostly people don't take you seriously. मज़े की बात ये है, but ये है कि as you go along then you start finding, if you don't have a growth mindset then you will never find people. But if you have a growth mindset and plus if you have consistency and if you have consistency and determination then automatically लोग आपको ढूंढते हैं and they come and come and join you and they align with you क्योंकि they know you have a growth mindset and you are capable of doing so many things. So now अब वो scenario है कि people contact me when they want to get their website landing pages written or they want me to brand their business, या अगर जो है as an influencer they want me to give some review on some product, so they approach me. So now I don't have to go to people कि भी okay this is my specialty. So but ये कि these things take time. अब मैं जो ये कहूँ कि भी आज आप स्किल जो है लर्न करें और कल से आपको जो है ना काम मिलना शुरू हो जाएगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट माइट टेक अ ईयर, इट माइट टेक अ ईयर और सो, बट ये है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड. आजकल जो ज़्यादा सिनेरियो में देखती हूँ वो ये होता है कि भाई आज आपने जो है 1-2 महीने लगाकर स्किल सीखी है तो यू वांट, यू मीन्स द यूथ, यू मीन्स दोज पीपल हु वांट टू have quick fixes, who want quick solutions. So life is not quick solution. Life takes a lot of time. It's painful. It's a mix of pain and pleasures as well. So you have to take everything accordingly and you have to stick to it and you have to be determined. उसमें बहुत से failures भी आएंगे. There might be days when you're going to be very down, you're going to be very depressed, but you're not going to let those things sink into you. क्योंकि अगर आप चीज़ों को अपने अंदर sink करना शुरू कर देंगे then you won't be able to do what you want to do in life, या आप अपने goals नहीं achieve कर सकेंगे. So you have to stick in there. अच्छा, सो इसमें ये पर्सनल डेवलपमेंट होती है कि पर्सनल डेवलपमेंट में यू हैव टू हैव अ ग्रोथ माइंड सेट, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन एंड देन यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. जिस तरह जो है ना हम लोग एट टाइम्स जो है ना बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों से मिलते हैं, लाइक यू मीट देम सम ईयर्स अगो, तो दे आर एनरोल्ड इन सम कोर्सेज, देन आप फिर उनसे मिलते हैं तो देन यू कम टू नो दे आर एनरोल्ड इन अदर कोर्सेज. So those people, it's not that they don't want to face professional life or the real world. Thing is, they have a growth mindset. They want to keep on learning, they want to improve their knowledge or broaden their knowledge, and that's not wrong. And practically ab I do the same thing. Like earlier when I used to do this, I would hear the same kind of thing कि भाई ये कभी एक चीज़ करी होती है, कभी दूसरी चीज़ करी होती है, but that's how my mind works and I'm curious about learning and I want to learn and I like learning things. Up definitely there are certain things which I can learn क्योंकि I find them interesting, but then there are other things which I cannot learn क्योंकि I don't find them interesting. So always do what you love. And that's how you keep on working on yourself, personally grooming yourself, personally developing yourself, and you keep on interacting with like-minded people. And then फिर वही सूरत हाल होती है कि if you plan to do anything and you get into that thing, तो आपका वो हाल नहीं होगा कि you are at a loss कि भाई अच्छा वेबसाइट तो स्टार्ट कर लिया, अब इसको आगे लेकर किस तरह चलना है या इसमें क्या करना है, ब्लॉग डालना है, कौन सा ब्लॉग डालना है, नीश करनी है, कौन सी नीश करनी है. So when you are learning, you get that knowledge in due course of time, एकदम से नहीं. Okay, then इसमें जो है अच्छा, let me take your comments. Aisha, thank you so much for joining in. I hope you're back or you're still in Dubai. Okay, Iqbal Zarkash, thank you so much for agreeing with me. Okay, then इसमें एक चीज़ आ जाती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. अच्छा, आप ये देखेंगे कि भाई जब आप एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं ना, न्यू एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं और इवन जो न्यू पर्सपेक्टिव्स भी जो है
फेस कर रहे होते हैं, तो यू कीप ऑन फ्यूलिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और वो ऑटोमेटिकली आते हैं. यानी इट्स नॉट दैट कि भाई आपको जो है ज़बरदस्ती आपकी जो है ना जहन में चीज़ें डाल रहा हो. You automatically things start coming into your mind. Up the other day someone contacted me, and he was asking कि भाई what is your flow of thought ना, कि how do you come up with writing or ideas जो आपके होते हैं. So my answer to him and to you as well is okay, yes, alhamdulillah, I'm enjoying here in Pakistan. Okay, great. So we need to meet. Let's meet after Ramzan. Okay. So Ramzan is a bit hectic. Inshallah, we'll meet after Ramzan. अच्छा, so my answer was कि कुछ चीज़ें होती हैं which come naturally to you, और अदर जो चीज़ें होती हैं then उसके लिए आप जो है सर्च करते हैं. So topics and discussions and different blogs, they come naturally. So I don't have to do anything. यानी मैं कहूँ कि भाई मुझे बहुत तगोदो करनी पड़ती है, या even I have to practice on those things. I don't. It's all natural. Even when I come live, I don't like do any preparation. So you might have noticed that as well. There are times when I am blank. Yeah, I just am short of vocabulary. So it's just that things are coming naturally. So as I'm talking, they're just coming into my mind, and I just keep on saying whatever I want to say, and relating them with my past or personal experiences. So that's how I go on. So innovation and creativity, it comes naturally. You don't have to be you don't have to learn it. And आप ये देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो है लाइक इनोवेशंस करते हैं, दे आरंट द वंस हु आर सपोज टू डू दोज इन्वेंशंस. लाइक यू डोंट इवन नो कि भाई अच्छा ये बंदा है या ये बनती है जिन्होंने ये इन्वेंशन की है. सो इट्स द क्रिएटिविटी. सो आपकी क्रिएटिविटी होती है, एंड इट जस्ट टेक्स टू यू टू डिफरेंट हाइट्स. So creativity can be in any form. It can be in writing, it can be in developing softwares, yeah, applications, yeah, in paintings, yeah, in in anything. So you just have to have that creative mind. You just have to be innovative, and plus you just have to be outspoken, rather than कि भाई आप डरते रहें कि भाई अगर ये कर दिया तो जहन में डर बैठ जाता है. क्योंकि what I observe in different universities, कि वहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो डर जाते हैं कि जी अगर हमने ये चीज़ सही नहीं की तो सुपरवाइज़र जो है मार्क्स नहीं देंगे, या ये चीज़ जो है ये आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा, वो आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा. सो यूनिवर्सिटीज़ डोंट हैव टू बी लाइक दैट. दे हैव टू बी वेरी ओपन. कोई किसी भी चीज़ पे जो है कुछ भी करना चाहे, यानी एज लॉन्ग एज दे कैन प्रूव देयर प्रोजेक्ट्स और प्रूव देयर सब्जेक्ट जो थ्योरीज है, या दे कैन डिफेंड देयर थीसिस वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर प्रोजेक्ट्स दे आर डूइंग. सो द टीचर शुड बी कंफर्टेबल विद दैट. और जब देखें स्टूडेंट्स में इतना जो है कॉन्फिडेंस हो गया, दे वोंट बी फेयरफुल, तो देन दे आर प्रोन टू डू मच मच इनोवेशन. सो अभी आई थिंक देयर are certain things which need to be changed in our education system. क्योंकि जब जो है आप यूनिवर्सिटी लेवल, इट्स द मोस्ट हाईएस्ट लेवल. सो अगर यूनिवर्सिटी लेवल में जो है आप बच्चों के जहन में डर डाल दोगे, तो व्हेन दे गो आउट इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो वो तो ऑलरेडी डरे हुए होंगे. तो व्हाट इनोवेशन दे आर गोइंग टू डू? पहले उनके जहन से डर निकालोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बी एबल टू get something out of them. So there are so many things which need to be changed, but apparently everyone needs to focus on themselves at the moment, and we can only give our suggestions. Okay, then इसमें जो एक और चीज़ आ जाती है कि which is important for perspective and deepening knowledge, that is cultural exchange and collaboration. Now ये चीज़ें तो जो है many of you might have witnessed at different colleges and universities, there are different exchange programs. Even अगर university और college में ना भी हों, तो then even through newspaper you get to see many news about well, there are certain collaboration programs going on, or you can go into different
countries, and they have collaborations. So professional collaborations भी होती हैं, university और college related collaborations भी होती हैं. But then what you can do is कि आप अपने end पे भी जो है create कर सकते हैं. You can, if you want to enhance your communication skills, you need to, you know, get in touch with certain ambassadors or certain people of a country, and then जो भी आपका जो है प्रोफेशनल फील्ड है या जो भी अगर आपका कोई एजुकेशनल फील्ड है, सो गेट इन टच विद दोज पीपल, talk with them and see if you can, you know, come up with sort of collaboration, या आप किसी किस्म का कोई एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं कि वही जो गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करती है, अगर इंडिविजुअल्स अपने ओन पे जो है एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर लें, तो देन यू कैन send exchange each and other, like their people can come into your country or your place. जिस तरीके से internships होती हैं, internships भी तो इसी तरह होती है कि भाई different organizations, they invite people to come and have internships in their offices, ताकि जो भी उनका काम है वो जो है बच्चे सीख सकें या यूथ सीख सकें, या जो भी जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या इवन आई वुड से कि स्टिल अगर कोई उस फील्ड में आना चाहते हैं, एंड दे कैन ऑलवेज कम एंड, यू नो, जॉइन दैट इंटर्नशिप एंड लर्न दैट थिंग, रादर देन कि आप उसको जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट बाउंड कर लो, या सिर्फ जो है एक स्पेसिफिक जो है लॉट को जो है टारगेट कर लो कि सिर्फ यही आ सकते हैं और सीख सकते हैं और कोई नहीं सीख सकता. सो यू नीड टू, यू नो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, have cultural exchange programs and collaboration among people, among organizations, rather than having it on the government level or anything like that. So this is another thing, like this is again when you start thinking and you start, you know, using your brain, you come up with so many, you know, diverse ideas and collaborations and creative solutions. These are all creative solutions. So I just keep on coming up with creative solutions. That's why I come live in these sessions, so I can provide these creative solutions to you for free. चलें जी. I'm sorry. अच्छा, फिर इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग बिफोर, इट इज़ कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इट इज़ वेरी इफेक्टिव. भाई मैं तो आज तक इसी को प्रैक्टिस करी हूँ. आई कीप ऑन लर्निंग 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 लर्निंग. So I'm just you know, in this habit of learning, but the thing is that whatever I'm learning, I'm imparting it as well. It's not that कि मैं जो भी learn कर रही हूँ वो knowledge मैं सिर्फ अपने तक रख रही हूँ. I keep on, you know, telling it to different people. Like there is so much knowledge and it's in different areas. So whenever people, you know, they approach me or they need a solution to a certain problem, I just tell it to them, and I don't find it like, I see it कि अभी जो है there are many people who are making, you know, profits out of it, and how they are learning a thing and then they, you know, they launch a course and they say, okay, you we are going to charge so and get enrolled in this course and we are going to teach you. I think इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि knowledge तो जो है कभी भी जो है आप पैसे देकर तो नहीं बांटते. Knowledge is something you just keep on imparting. Well, that's my view of thinking and that's my way of thinking. I won't say कि दूसरों को भी इस तरह सोचना चाहिए. Well, there are people who you know, impart knowledge for free. That's their own way of thinking. But then there are others who impart certain knowledge, certain course, by taking fees and then imparting that knowledge, and that's their way of thinking. Well, I'm not going to, you know, say कौन गलत है कौन सही है, but I feel what I feel I do. So I'm not going to, you know, target or say to anyone कि you should do this. So जिसने जो करना है करता रहे. It's none of my concern. As long as I'm doing the right thing and I'm happy with it and I'm comfortable, I'll keep on doing that. Okay, so lifelong learning, it's very helpful, it's very essential, and you know, the more you keep on learning and upgrading yourself, जिस तरह जो है आप कंप्यूटर को देखते हैं ना कि अगर उसका जो है विंडो जो है थोड़े दिन तक आप जो है उसको रीइंस्टॉल नहीं करते, ओके, अगर आप विंडो को जो है इंस्टॉल नहीं करते तो वो जो है बार बार आपको जो है मैसेज आना शुरू हो जाता है, योर विंडो नीड्स टू बी स्टार्ट, अपडेट योर विंडो, रीलॉन्च द फिनिश. तो इसी तरीके से जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है ना, इट ऑल्सो नीड्स अपडेटिंग. सो यू नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ. You need to, you know, keep on improving yourself and acquire knowledge which you are comfortable with and which you can easily grasp.
अगर कोई ऐसा नॉलेज आप लेने की कोशिश करें, लाइक इफ़ यू आर आर्ट स्टूडेंट एंड आई टेल यू टू गो एंड डू कोर्सेज इन मैथ्स, सो हो सकता है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, या अगर मैं अपने बारे में भी बात करूँ, आई वॉन्ट टू गेट इन टू मैथ्स, बट येस अगर किसी चीज़ में मैथ्स रिलेटेड कोई चीज़ आ रही हो, कोई आर्ट्स की चीज़ हो, कोई डिज़ाइनिंग की चीज़ हो, तो आई वुड लव टू डू दैट. And then there are other so many things, there are things related with AIs, then there are things related with digital marketing, cyber security, there are so many things. So I would love to know about these things and keep on gauging my knowledge about these things, क्योंकि these are the things जो कि अब जो time आ चुका है in fact digital world का. So you need digital marketing, you need to know how to have make strategies, and what are strategies, tactics किस तरह आप करते हैं, social media marketing क्या है, content marketing क्या है, search engine optimization क्या है. So you need to know these things, because these are all handy and they help you in one form or the other. So this is how you keep on learning. And then इसका जो है ना, अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा व्हेन यू हैव ब्रॉडन पर्सपेक्टिव. ना सिर्फ आपका जो है नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड डीपन होगा, यू कम टू नो अबाउट डिफरेंट पीपल एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट उसके साथ ये भी होगा कि आप खुद भी ना फॉस्टर कर रहे होगे ग्लोबल सिटीजनशिप को, और उसमें यह है कि यू विल बी अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी वन, एंड देन यू विल बी फोकसिंग ऑन थिंग्स which are needed. You'll be raising your voices for different things, maybe for injustices, maybe for um, maybe in order to understand the world better and have a better perspective of what is going on in the world. So you won't be isolated. So that's what digital media is all about, or being present in the digital world or online. This is all about broadening your perspective. It's not about, हम आमतौर पे जो है ना बहुत दफ़ा जो है ये चीज़ जो है पढ़ते हैं कि भाई डिजिटल वर्ल्ड इट्स स्पॉइलिंग द यूथ. yes, it is spoiling only those who are using these social platforms in a negative way. Instead of learning, they're wasting their time, they're wasting their energies. But for those who want to learn something, or want to have a good future, or want to have better perspective, future perspective, so they are utilizing the digital world in a positive way. They are learning something, and they are applying those energies, and they are making money out of it. So you always have to learn knowledge and apply it in a positive way, rather than उसको किसी derogatory way में use करें. So this was all what I wanted to share regarding today's quote. And now I would like to see आपके अगर मेरे लिए कोई questions आए, so I would love to take those questions. And I can see someone at the top of my screen, Aisha. I will try to bring Aisha on camera if she wants to come. Okay. And Bushra, thank you so much for joining and watching this session. And if you have any other topic which you want me to cover, you can always pour in your suggestions and comments in my inbox, and I'm going to take discuss about those as well. So now let me see if I can bring this lady. This is Aisha, and she's a counselor. She does counseling. So okay, there are actually two. So first, this is the display picture of a man. I don't know what is this. It's not very obvious. So I'll see if this person is somewhere down over here. Maybe then I can make out of the display picture what is it about. Let's see. Okay, I'm still adding this person. I don't know whether he'll be able to come. Okay, I guess it was declined. So let me check Aisha. Okay, so Aisha is a counselor, and she's a pre and post marriage counselor. So those of you who have, okay, well, she declined as well. I can't take her online. So any one of you who have problems regarding their marriage, you can always, consult her, and she would be able to deal with your problems in a better way. Okay, so there's one other person. I don't know.
This is a glass or a book, I don't know. So let me just check. But then, okay, this is Hamza. Hamza, you want to come online? Okay, okay, Aisha. I won't take you on camera. No problem. Okay, so Hamza has a stationery and he has a stationery. I usually, get my art supplies from him, and his art supplies, they are really of very good quality. So those of you who are into art or who want to, take anything regarding art, can always consult this stationery traders, but his name is Hamza, so you can always contact me. And I'm just trying to bring him on camera, but I think he won't be able to come on camera as well. But I'm still trying to add. Let's see. Okay, so because connection failed. So no problem. So inshallah tomorrow I'll come live again with another new topic, another fresh perspective regarding different things, whether it's personal or professional. So see you tomorrow. Till then, bye bye. Take care. Allah Hafiz.